Hello all, very good evening. Online students, am I audible? Okay. So, बड़े मालिक ने एक आदेश दिया है and that I have to follow. That is, I have to discuss how to utilize this time period that is from October to January if you're planning for 2025. Okay. And for all those who have actually planned for this next year attempt, okay, this is the most crucial time. And that's why whatever I say, it might happen that you might have learned about it, or it might not be something very flashy or something extraordinary. But just pay attention to कि आपके लिए ये टाइम कितना क्रूशियल है और इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है if you want to make best of your next attempt or say that attempt in 2025. Before I begin the strategy, what I have prepared or what I want to discuss, I just want to tell you my personal story. Okay, and that will actually make you relate to why I am taking this session in the very first place. So my first attempt was in 2014. Okay, and I wrote 14, 15, 16, and 17 mains. 4 mains लगातार लिखे. Okay. Now, what took me not to qualify? The only reason was that I was never mains ready. Okay, and the major problem was that in the very first attempt, I appeared for the exam without thinking about mains. I thought कि एक बार prelims निकल जाएगा and I'll definitely prepare for the mains accordingly and whatever. But what happened that was the 2014 was the last year in which CSAT score was supposed to be included. उसके बाद CSAT became qualifying. So that very year I did not perform very well in GS paper 1, but somehow because of the CSAT score I managed to qualify prelims. I wrote mains without having any preparation of it. Okay, I have not written answers, even some part of the GS syllabus was not complete. And somehow I attempted mains. And my score was very much pathetic in the very first mains. So that time in 2014, the mains used to happen in December. Okay, so after December, say you get so much exhausted after appearing for the mains that you don't get time to say get back again. You, despite knowing that you are not going to qualify mains, you don't get time to start again. Now 2-3 months of break, and then again I'm in that same cycle preparing for prelims again. Okay, so I never get to stop, think back, reflect back, or prepare for mains, and then I give the next attempt. So 14 का attempt दिया, मेंस नहीं हुआ, वो तो पता ही था. 15 का attempt दिया, लेकिन उसमें भी मेंस की तैयारी नहीं हुई. फिर से prelims qualify किया, मेंस लिखा. So the major problem actually it happens is कि suppose if you qualify prelims without preparing for the mains, it is not going to affect that attempt. It is going to affect even the next attempt as well. So आपके 2 attempt खराब होते हैं. Why? Because ये वाला attempt आप suppose करो सितंबर में से next year अगस्त में मेंस दे दिया and अगर नहीं qualify हुआ तो आप अगले साल उस साल दिसंबर तक कुछ नहीं पढ़ने वाले because you are so exhausted, and eventually from January again you will be preparing for the prelims, and that's how the consequent attempts खराब होते जाएंगे. And that is what I wanted to emphasize ki why it is very much important to first prepare for the mains before you decide to start your preparation for prelims for sure. Okay, and it will definitely give you a boost. It will definitely give you a stability, mental stability, to actually give your attempt in the best possible manner. And if you're planning for 2025, so this 4 months starting from October till January 25 is the best time to do it, because from February, March, April, and May, 26 days of May, you will be solely focusing upon prelims. You won't be getting time for preparing for mains. So now, before beginning the strategy, I can tell you that everybody will not be in the same stages of preparation. So some of the people might be actually going for the classes. Okay, GS classes कर रहे होंगे, and for them there is no point listening to this phase. आप अपना वीडियो एग्जिट कर सकते हैं. You can actually, और जो भी ऑफलाइन में भी they can go, because अभी आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है to finish your classes. Okay, don't go for any other things if you are going for GS classes, because you have spent a lot of money. You have spent and आप दोबारा कभी फाउंडेशन नहीं कर पाओगे, and that's why focus only upon your classes. Try to finish the syllabus first by your classes, and then think of any other strategy. Okay. And for those who have actually gone for one reading, at least या classes खत्म हो चुकी हैं या एक reading कर ली है या self study कर रहे हैं, and you have done your one reading, for them this session is most useful. Okay. So talking about this GS, there are total 16 subjects
that are available or that are there with GS. Okay, I'll just list it down. For GS1, there are 16 subjects like Modern India, Art and Culture, Post-Independence, World History, Geography, Indian Society. Simultaneously, GS Paper 2, Polity, Governance, IR and Social Justice. Paper 3, it's Economics, Science and Tech, Internal Security, Disaster Management, and Environment. And finally, the fourth, Ethics. So first thing that you have to do in the very first month, in the October itself, out of these 16 subjects, जो भी आपका prepared नहीं है, prepare notes of that. Okay, अगर आपने, say you must have read polity or you have done some classes somewhere, so it is not necessary that every class will take care of every subject completely. So there are some areas that might have been missed there. So you might not have good notes of internal security maybe, you might not have good notes of Indian society maybe, or maybe social justice or IR is not covered, or maybe ethics might be left. So whatever is left, just give 1 month at least to make notes of it, or basically to gather the content or to gather the sources of it. So that जो भी subjects हैं, this out of these 16 subjects, every content or every subject's content or material should be available with you, no matter what. अगर आप लोगों ने notes नहीं बनाए हैं अभी तक, so in that case, there is no point of making notes because these 4 months will be very less to make notes by yourself. So don't start this practice of making notes कि अभी इन 16 subjects के notes बनाएंगे. अगर आपने by book या कुछ coaching के materials या कहीं और से reference लिया है, say toppers notes or what, so make that as your base notes. Okay, refer to them only, and whatever is left, just create or say just collect the content of it. So give 1 month to it at max, and bring all the content of GS based on these 16 subjects at one place. So at least suppose if you decide that today I have to read Modern India, you should have say 100 pages of notes or 200 pages of notes that you are going to refer per se. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पार्ट यहाँ पे है, कुछ पार्ट किसी और बुक में है, कुछ पार्ट किसी और बुक में है. Just compile it, bring it at one place. So that is your first priority. Because if you are done with this, कि अगर आपने 16 register बना दिए, that with respect to all the subjects that are there, आपका 50% task वहीं खत्म हो जाता है. 50% is having the content at appropriate place. That is the most important thing that you should be doing in the very first place. Okay. अब इसमें से 2 subjects ऐसे हैं which I would request you not to go for too much of content because return on investment is very less. That is post-independence and world history. Almost every 2-3 years से मतलब हर साल एक सवाल या 1-2 साल से तो सवाल भी नहीं आ रहे. Okay, they are not. I have not seen today's paper. Maybe I'm not sure कि उसमें world history से 2 सवाल आए. So yes, but the syllabus is very big, post-independence and world history, and that's why what I would suggest is that there are several short notes in the market for post-independence and world history, or there are several toppers notes in the market for post-independence and world history. You can refer to that, and plus आप PYQs करेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा. Okay, so I'll discuss कि how to cover this. यहाँ पे किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है because ultimately the utility of it is very less. Okay, so this is the breakdown of the subject, and the पहली priority, bring content at one place. Okay, now what you have to do, what is the second step that you have to follow? Say after 1 month or say 15-20 days, you have covered almost everything. जो भी आपका week था, जो भी आपका छूटा हुआ था, you have brought it at one place. Now what you have to do, start revision with the subjects. Say suppose if you start with Modern India, now suppose if you revise Modern India say in 2 days or 3 days, what you have to do is just keep PYQs with yourself. Okay, and 5 to 6 years at max. 5 से 6 साल के PYQ more than enough है. And what you have to do is, like once you read a particular unit or a particular area, just check
the questions from these areas what have come in the exam 5-6 साल में, and once you read it just try to answer it. इससे दो फायदे हैं. एक, आपको अपना कंटेंट पता चलेगा कितना वैलिड है, whether my content what I have prepared it is enough to answer PYQs or do I have to refer something more. आपकी validity, else क्या हो जाता है कि we end up like searching for the content, कुछ यहां से मिल जाए कुछ वहां से मिल जाए, and we always are in search of some new content. Okay, maybe 1 or 2 questions might come from some other sources and we immediately switch our source, but अपने को वो करने की जरूरत नहीं है. Just check PYQs and whatever questions from the PYQs you are not able to answer from your existing content, just add relevant dimensions into your notes. Nothing more than that. And इसके एक दूसरा advantage है that you are basically learning the answer writing as well. So your content is also getting validated, comprehensive हो जाएगा, एक जगह पे आ जाएगा. At the same time, you will be learning the skill of precipitating whatever you have learned. Problem क्या है mains में? We are supposed to write in the exam, okay? पर हम practice में क्या करते हैं? We read, and that's why there is a big gap between what we practice and what we are supposed to do in the exam. आपको अगर sprint दौड़ना है, so you will be practicing running there, okay? आप gym में जाके dumbbell नहीं उठाओगे उसके लिए. But the problem with mains is that we are supposed to write the answers in the exam, and that too in a very time-based manner. 7 to 8 minutes, we have to write a 10-marker answer. And instead, what we do is we keep on reading, and we keep on telling our brain कि याद होगा तभी तो लिख पाएंगे, याद नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे? पर लिखे बगैर कैसे आप improve कर पाओगे? So keep on reading, revising and revising, thinking that a utopian day will come when I'll be able to remember everything. जो यहाँ पे लिखा है वो as it is लिख दूंगा, ऐसा होता नहीं है. Okay, so your first answer will be very bad or like disastrous, and eventually your answers will improve as you write. So as I have heard one of the faculty of LevelUp, Nikhil sir, was saying that answer writing is more like a performing arts. Okay, you improve by practicing. आप जैसे कि if you are a singer, the first time you sing a song, it will be average. But with every riyaz that you do, every kind of practice that you do, you will improvise upon your vocals. Okay, अब हो सकता है कि पहली बार में कुछ सुर गलत लग जाए, उसके बाद सुर सही होते हैं, and तीसरी बार ऐसा हो सकता है कि वो सुर उस ओरिजिनल से भी बेहतर लगने लगे. Okay, and that is what the practice can do to you. But बिना प्रैक्टिस किए रीड करते जाना एंड सोचना कि मेरे आंसर मॉडल आंसर्स बन जाएंगे और आई राइट लाइक शशि थरूर, ऐसा होगा नहीं. ओके, सो इन दैट केस प्रैक्टिस इज द की. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि वी थिंक दैट कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस हो जाएगा, बट टेस्ट सीरीज में हेल्प, पर वो आपको आंसर राइटिंग स्किल्स नहीं सिखा सकता. टेस्ट सीरीज आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है. टेस्ट सीरीज इज नॉट टू लर्न आंसर राइटिंग, बिकॉज सपोज कर इफ यू जॉइन ए टेस्ट सीरीज and it might have 10 to 12 test papers, तो आपको effectively सिर्फ 10 से 12 दिन लिखने का मौका मिल रहा है. But what is required is writing every day, improvising every day, not just 10 to 12 days in 3 or 4 months. उससे कुछ नहीं होगा. You don't have the time to, और वहां पे आपका फोकस पेपर कंप्लीट करने में होता है rather than answer writing में. So understand the purpose of these two things. Answer writing is or has to be done on a daily basis. Test series is once you have learned the skill of answer writing, then whether you are able to finish it off in the time period, उसके लिए टेस्ट सीरीज है. आप अपने आप को उस तरीके से स्टिमुलेट करते हो. So test series won't help you right now. What will help you is daily answer writing. Okay, and what to write daily? Not some random questions. Just check what has been asked in the UPSC. कोई बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, PYQ लिखने हैं अपने. And अगर आप PYQ आंसर कर पा रहे हो, तो that means whatever you have covered in the syllabus, whatever the notes are there, your notes are comprehensive and are capable enough to get you through the mains. Okay. Now, why PYQs are also very important? Because PYQs reflect, or there are certain themes that will keep on repeating itself. So if you have done 5 to 6 years of PYQ of GS, trust me, in any of the paper, GS paper 2, 3, 4, or even paper 1 also, you will find 60 to 70% of the questions repeated. Not
exactly word by word, but at least theme wise. And I can give you the example. Okay. So for example, GS paper 3 में एक topic है agriculture. There will be one question on agriculture. Say economics में there are 13 questions in GS paper 3. Every year 12 to 13 questions are there. And these 12 to 13 questions are from one chapter of economic survey. Economic survey के भी 12 से 13 chapter होते हैं, reflecting one particular sector of economy. And one particular sector of economy से एक सवाल हर साल आएगा. So every year there will be one question of agriculture. Every year there will be one question from industries, okay, or logistics, infrastructure. हर साल एक सवाल आएगा. And you'll see that agriculture में there are certain areas. For example, one year they will ask question from input, seed, fertilizer, कुछ इस बारे में पूछ रहे हैं. Next year they might ask questions from processing sector of agriculture. The third year they might ask about the output sector of the agriculture. Supply chain के बारे में कुछ सवाल पूछ लेंगे. Processing में से agro processing industries के बारे में पूछ लेंगे. And some year they might ask fertilizer, seeds. But over 5 years, every sector of agriculture is covered. उन्होंने हर साल में एक थीम को पकड़ा है और उसको पूछा है. 5 साल में सारी थीम्स कवर्ड है. If you have done PYQs of 5 years, आपने एग्रीकल्चर की सारी थीम कवर कर ली. So next year there might be some questions, but इनमें से ही कुछ पूछेगा वो. Okay, it might not be exactly the same, but you will have relevant data, you will have relevant intro, conclusion, you will have relevant way forward, because it is concerned with a particular sector that you have already covered. Similarly, polity में भी यही होता है. There will always be one question on center-state relation every year. Now, one year they might be asking on role of governor. One year they might be asking about state and UT relation. The third year they might directly ask a question on federalism. Okay, but वो 5 साल में जितने भी center-state के possibilities हैं वो पूछ चुके हैं. Okay, घूम फिर के उन्हीं में से कोई question आएगा. This year if they want to innovate, they might ask a specific case कि कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके बारे में कुछ एनालिसिस करिए. But ultimately center state relation पे एक सवाल आना है. And over 5 years they have covered almost every possible theme that can be there in the center state. और ऐसे ही कुछ ना कुछ जो themes हैं they keep on repeating. And I'm not saying that 100% repeat हो जाएगा. But if you have done last 5 years question, 70-75% will be very much similar. So out of 20 question you might find 15 to 16 question of the same theme. Now imagine what actually happens that 4 सवाल आपके out of the box है, syllabus से भी बाहर है, suppose करो, ठीक है, but you are finding that 16 questions you have already know some content है आपके पास, intro है और some relevant data है, schemes है, way forward पता है, clarity है पूरी की पूरी. In all such cases what actually happens is कि it will create some kind of adrenaline rush. ये देखे देखे सवाल लग रहे हैं और वो जो बाकी 4 सवाल हैं वो भी फ्लो में निकल जाएंगे. You will not feel that heat. बट सपोज करो कि आपको बाकी 15-16 सवाल जो बाकी सबके लिए फेमिलियर हैं आपके लिए उतने ही नहीं है, नए हैं वो. In that case you will take a lot of heat to attempt those questions first, and वो शायद आप उन 4-5 सवाल जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स हैं वहां तक पहुंचोगे ही नहीं. You will leave that paper. Okay, and when you are leaving one question in the paper, you are out of the race. आप रेस से बाहर हो. Okay, because पेपर छोड़ना is like doing a sin in the mains exam. वो पाप है. और जितने क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो इन एवरी जीएस पेपर और से इन योर ऑप्शनल, इवेंचुअली यू आर पुशिंग बैक, यू आर रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड. ऐसे ही एथिक्स में भी है. एवरी ईयर देयर आर 7 केस स्टडीज दैट इज बीइंग आस्क्ड. 5 years total 35 case studies, and 35 case studies means 35 possible ethical dilemmas that can happen in the life of a person. Personal, professional, whatever possible ethical dilemmas. There cannot be a 36th type of ethical dilemma. वो जितने भी ethical dilemma है वहीं पे पूछ चुके हैं वो. Okay, the stories might change, the name of the character might change, but eventually जो पीछे का dilemma है that is one and the same. And once, और आप देखोगे, आप कंपेयर कर सकते हो लास्ट 5 साल के केस स्टडीज को उससे 5 साल के केस स्टडीज से. You'll find that eventually they are asking the same thing. Okay, that is what actually is required. अगर आप लास्ट 5 साल के केस स्टडीज भी सॉल्व करते हो, even after reading one paragraph of the new case study, you will find that it is matching with something that I already solved. And in that case, it's better. आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप उसका आंसर लिख सकते हो. What will be changing is just some story, some character's name, nothing more than that. The background of it, the theme of it will be same. And that's why PYQs are must.
एंड जब तक आपके PYQs नहीं हो जाते लास्ट 5 years के, don't ever join a test series. Okay. Now why not to join this? Because देखो जब आप PYQs आपने रोज आंसर नहीं लिखा है, तो when you join a test series, what actually happens is you have to write 20 answers, that too in a go. 3 घंटे में लिखना है. And if you have not developed that endurance कि आप 20 आंसर तक अपने आप को सस्टेन कर सको, so like टेस्ट सीरीज आप समझो कि एक मैराथन की तरह है, और डेली आंसर राइटिंग इज मोर लाइक ए जॉगिंग. बट यू कैन नॉट रन ए मैराथन डायरेक्टली इफ यू हैव नॉट जॉग एवरी डे. तो आप रोज दौड़ोगे थोड़ा 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 करके, तो अपनी एंड्योरेंस, बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ाते हो, एंड देन इवेंचुअली यू रीच ए स्टेज व्हेन यू कैन रन फॉर 10 or 20 kilometers इन ए स्ट्रेच. एंड दैट इज व्हाट टेस्ट सीरीज वुड रिक्वायर. आपको 20 आंसर तक अपने दिमाग को स्टेबल भी रखना है. आप सीधे जाके एक टेस्ट पेपर लिखने बैठ जाओ जिसमें 20 सवाल हैं, 5 सवाल में आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, छठे में तो इट बिकम्स ब्लैंक, 7वें तक तो यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, आप उठ के टॉयलेट चले जाओगे, पानी पी के आ जाओगे, और मे बी यू माइट टेक ए टी ब्रेक. एंड 8th आंसर तक योर ब्रेन स्टार्ट गिविंग यू सम काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस. क्या कि यार 7 कर लिए, 20 सवाल हैं, जो भी स्कोर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट विल बी माई इफेक्टिव स्कोर आउट ऑफ 250. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी एक्चुअली गिव सम काइंड ऑफ रीजंस टू अस कि 10 सवाल कर लेते हैं, जो भी स्कोर आएगा उसको डबल से कर देंगे, दैट्स हाउ 250 में से मेरा स्कोर होगा. एंड आपका स्कोर इतना बुरा आएगा पहले टेस्ट में दैट यू विल नेवर डेयर टू अटेम्प्ट द सेकंड टेस्ट. आप मॉरली एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड दैट इज व्हेन टेस्ट सीरीज बिकम्स अ फोबिया, और वो टेस्ट सीरीज पूरी बेकार हो जाएगी. द रीजन इज हमने डेली लेवल पे जॉगिंग की नहीं, एंड डायरेक्टली वी वेंट टू रन मैराथन. तो वहां पे बीच में ब्रेकडाउन होना इज वेरी ऑब्वियस. बट अगर आप डेली PYQs कर रहे हो, you will develop that endurance, and then you will be able to write a full test. Okay, तो अगर आपने PYQs कर लिए हैं, go for a test series then. Okay, and then you will be able to sustain it. So this is what you have to do. So then say आपको अक्टूबर में से once you are done with the syllabus, एक एक सब्जेक्ट उठाया, say मॉडर्न इंडिया पकड़ा, रिवाइज किया, लास्ट 5 years PYQ किए, एंड जो भी कंटेंट PYQ सॉल्व नहीं कर पा रहा, जिसके क्वेश्चंस के कंटेंट नहीं है, जस्ट ऐड इट टू योर पेपर. सो इफ यू सी दैट कि 5 साल के PYQ मिला के देयर आर 400 क्वेश्चंस इन GS इन्वॉल्व. से 20 क्वेश्चन एक साल में, तो एक GS पेपर के 100 सवाल, 4 पेपर्स, टोटल 400 क्वेश्चंस आर देयर, एंड यू हैव 90 days टू अटेम्प्ट इट. सो ऑन एन एवरेज it comes out to be 4 to 5 answers a day. That is what you have to do. 4 से 5 answers daily. It does not seems to be a very big task, but trust me, अगर आपने इतनी endurance दिखाई, इतनी consistency दिखाई कि आप दिन में 4 answers GS के लिख रहे हो, and till January if you are able to finish last 5 years paper, there is very high probability जब आप mains लिखोगे, you are going to qualify it. As far as I know, say based on my limited experience of being in this industry, first as an aspirant and then later as a teacher, what I have found is कि out of this year, जैसे कि 12-13 हजार लोग जो मेंस लिख रहे हैं, 70% of the people are not even able to finish the paper. वो पेपर ही नहीं खत्म कर पाते, and out of those remaining 30% majority select हो जाते हैं, मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं. तो first target is to finish the paper. Okay, and that will eventually happen जब आपकी daily practice हो रही है. And second, if you're finding 70 to 80% of the questions very similar to what you have already practiced, तब आप जाके 7 मिनट में 8 मिनट में आंसर्स लिख सकते हो. अगर आप सारे क्वेश्चन स्ट्रेंज या पहली बार लिख रहे हो, तो will not be able to finish the paper in the very first place. So that's why just make sure that it is a ritual that 4 answers a day should be written by you, and whatever subject you are reading, just pick up the mains का paper last 5 साल का, 3 से 4 answers, and you are done for the day. Okay, so this is what you have to do for GS. Now second thing, parallelly you will be covering your optional. Okay, so there can be 2 ways. One is like if you're reading 10 hours a day, and if you have a habit that you can read say 2 subjects a day,
आप जीएस भी पढ़ सकते हो और ऑप्शनल भी कर सकते हो. तो देन डिवाइड योर डेली शेड्यूल इनटू 6:4. दैट इज 6 hours फॉर जीएस एंड 4 hours फॉर ऑप्शनल. और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि दैट यू कैन नॉट स्विच बिटवीन द सब्जेक्ट्स इन ए डे, कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, वंस यू रीड ए सब्जेक्ट यू डिवोट एन एंटायर डे टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन दैट केस डिवाइड 4:3 काइंड ऑफ इन ए वीक, और 5:2 भी आप कर सकते हो बेस्ड ऑन आपकी ऑप्शनल की तैयारी कैसी है. सो 4 days फॉर जीएस एंड 3 days फॉर योर ऑप्शनल, दैट कैन बी डन इन ए वीक. ओके, ऑप्शनल में भी यही करना है. टेक आउट योर सिलेबस एंड जितना भी आपका, आई डोंट नो आप लोगों के सबके ऑप्शनल अलग होंगे, बाय द वे आई टीच एंथ्रोपोलॉजी, सो टेक आउट योर सिलेबस, जस्ट चेक फर्स्ट कि वॉट एवर इज मेंशन इन द सिलेबस, यूनिट सब यूनिट वाइज, वेदर आपके नोट्स में है या नहीं है. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फिनिश द सिलेबस and then start revising optional, and in that optional also 5 to 6 years of PYQ is enough. प्रॉब्लम ये है कि इस बार ये करना और जरूरी हो जाता है बिकॉज बिटवीन प्री एंड मेंस यू आर गोइंग टू गेट 80 days. द टाइम इज वेरी लेस, एंड उस केस में ना कोई आप नया सब्जेक्ट तैयार कर पाओगे, ना आप PYQs या इस टाइप की चीजों को अटेम्प्ट करने का सोच सकते हो. द टाइम विल बी वेरी लेस, you will hardly be able to write a test series, or you will hardly be able to say revise your GS and optional once or twice. Okay, the days are very much limited. Earlier they used to be like 110 or 112 days. Now they have reduced it by 1 month. Already time कम था, अब और कम कर दिया गया है, and that's why it will be more like a race होगी वहां पे 80 days में. And you just cannot expect कि कुछ छूटा हुआ है तो उस समय कवर कर लेंगे. You just cannot expect that कि PYQs या कुछ भी एक significant section अगर छूटा हुआ है तो वहां पे हो जाएगा. So remember this, 5 to 6 years of PYQ. And in this case, when you see optional में, so there are 28 questions in a paper. 5 साल के पेपर मिला के, पेपर 1, पेपर 2 मिला के, it will be 280 questions in total. And that you have to attempt in 90 days. So here also comes 3 questions a day have to be attempted. Okay, so 4 questions of GS PYQs and 3 questions of optional PYQs have to be answered on a daily basis. And if you do so, consistently आपकी writing practice हो रही है, at the same time you will get to check कि मेरा notes complete है या नहीं, and eventually you will be able to make your comprehensive notes. And the third thing is like you are preparing yourself for mains so that 70 to 80% of the questions that you're going to see in the mains will exactly be from this. The best confidence booster hai ye. Okay, so this is how you should be focusing upon the next 3 or 4 months. Now coming to the sources. See, at this point of time, it is not required to change any sources. So अगर आप में से जितने लोगों ने क्लासेस की हैं कहीं से आपने कहीं भी कोचिंग की होगी, तो फर्स्ट और योर फाउंडेशन शुड बी योर क्लास नोट्स. द बेस नोट्स शुड बी योर क्लास नोट्स. व्हाई क्लास नोट्स? बिकॉज पहला एक्सपोजर आपको किसी भी सब्जेक्ट का उस क्लास के थ्रू मिला है, and your thinking has actually been shaped by those class structure only, the notes of that structure. You just cannot pick up any new notes and start analyzing a subject from that point of view. Say modern India है, modern India को पढ़ाने के 10 तरीके हैं. The 10 different people will have 10 different ways of teaching it. And अगर आपका पहला exposure किसी एक तरीके से हुआ है, you just cannot switch it. Okay, because it will take a lot of time to adjust to some new notes. And that's why take your class notes as your base. And then अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है तो आपको एक कोचिंग मटेरियल भी मिला होगा. ओके, से सम बुकलेट्स. नाउ मोस्ट ऑफ यू might have taken coaching from some relevant institution or so big institutions. उनकी कंटेंट टीम बहुत elaborate है, बहुत बड़ी टीम है, and whatever sources are available in the market, they bring it together and they start to compile it in a single booklet. So उनके जो मटेरियल भी होगा उसमें मार्केट की जितनी किताबें हैं, जो सोर्सेज हैं, वो सबको मिला के बनाया गया होगा. तो दैट शुड बी द सोर्स फॉर योर वैल्यू एडिशन, rather than looking for 10 books here and there.
कि थोड़ा सा यहाँ से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले. Go for that one particular source, and that is more than enough. So, for example, if you're reading one particular unit in your class notes, just compare that unit in the coaching material, whatever it is there. And then whatever is missing in your class notes but there in the coaching material, just add it to your class notes. And that's how your notes become comprehensive. And third thing that you have to do, once you have combined these two, check PYQs. कि PYQ सारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. अगर हो रहे हैं तो that means your content is enough. Else, जो भी missing है, add it. And that's how the source is done. Now, this is only for those who basically have done some kind of classes. But there might be a lot of individuals who might have not done any kind of classes. वो self study कर रहे होंगे. देखो ये self study तो एक myth है. आप क्लास चाहे पे करके करते हो चाहे टेलीग्राम से करते हो. So क्लास तो हो ही जाती है. ओके, सो आपने कोई नोट्स बनाए होंगे और अगर आपने सीरियसली कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो इन दैट केस अगर आपने बुक्स वगैरह से इधर से उधर से पढ़ा है तो टीयर द पेजेस ऑफ द बुक, ब्रिंग इट एट वन प्लेस. और अगर वैसा भी नहीं है तो इन दैट केस यू कैन टेक सम टॉपर्स नोट्स एज योर बेस. ओके, यू कैन टेक सम टॉपर्स नोट्स एज योर बेस एंड देन अगेन ये आपका पहला बेस combined with some coaching material, any coaching material that you feel is okay, you can bring it up. इसको compile करके go with PYQs. So this is your source. That is what you need to follow. Then talking about कि आप लोगों के दिमाग में सबसे पहली डाउट आती है कि PYQs लिखे तो evaluate कैसे करें. Who is going to check whether I am writing good or not? And that is one of the reason. Our brain will give you 100 of reason how to procrastinate answer writing. कभी बोलेगा कि याद नहीं है तो नहीं लिखते हैं, कभी बोलेगा कि जब परफेक्ट आ जाए आइडिया आ जाएगा तो लिखेंगे, कभी बोलेगा टॉपर्स के नोट्स देखे, टॉपर्स के आंसर्स देखे, वो इतने अच्छे लिख रहे हैं, हम तो वैसे लिख नहीं रहे. हमारा ब्रेन हमें 100 बहाने देता है आंसर ना लिखने का. एंड वी फॉल इनटू दैट ट्रैप. आज नहीं तो कल कोई ना कोई ट्रैप में फंस ही जाएंगे. The reason is we actually have been trapped in a sense of perfection and sense of completion. और वो कभी होगा नहीं. ना हम कभी perfect answer लिख पाएंगे, ना हम कभी syllabus complete कर पाएंगे. It will never happen because the syllabus, it's not a 10th class exam that you will be reading the syllabus like 10 times and then you will be appearing for the exam. It's a different category of exam. And here what is required is a common sense rather than specific idea about a particular topic. And moreover, when you keep on writing, what you develop is a muscle memory, and जिसकी वजह से आपका पेन चलता रहेगा even if your brain is not giving you some substantial points. Okay, एग्जाम में जब आप जाओगे, say based on my experience I'm telling you, आप में से कुछ लोगों ने मेंस भी दिया होगा. When you go there and sit in the mains hall, आपने जो भी पढ़ा है ये सब मिलके खिचड़ी हो जाता है. Okay, it's so mixed up. It's not like that कि आपके दिमाग में कंपार्टमेंट्स हैं कि जीएस पेपर 1 के दिन वो कंपार्टमेंट खुलेगा एंड वहां से नॉलेज आएगी और जीएस पेपर 2 के दिन पॉलिटी वाला कंपार्टमेंट खुलेगा एंड देन यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जीएस पेपर 2. नो, व्हाटएवर यू हैव रेड, नॉट इवन इन दिस 1 or 2 years, इन द एंटायर लाइफ जो भी नॉलेज गेन की है वो सब एक जगह आ जाती है एंड उसके बाद आप जो दिमाग में आ रहा होता है आंसर लिखते समय लिखते हो. ओके, इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट ऑल्सो. व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, बिकॉज and moreover the time is so limited, 7 to 8 minutes of answer writing. In that case you just cannot pause to think about a point that is relevant. At this point of time your muscle memory comes into play कि अगर आपने प्रैक्टिस ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे की है, in that case आपको पॉइंटर्स, आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. ओके, सो यू शुड नॉट बी वेटिंग फॉर the time when you will get some evaluator to evaluate your answer on a daily basis. आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है. क्या? First, that your answer should have a structure. Randomly कुछ नहीं लिखना है, structure होना चाहिए. Now what is the structure? Simply it should have 3 dimensions. That it should have a beginning, intro होना चाहिए. It should have an explanation, that is the body, and it should have an appropriate end. It should not randomly end कि बस बोल दिया अब खत्म हो गया, बात खत्म हो गई. You should have an appropriate closure of that answer. Okay, ये 3 चीजें आप intentionally include करो. Your intro might be very bad, your conclusion might be disastrous, it might not make any sense, but still वो लिखते लिखते ही बनेगा. Improvement भी
लिखते लिखते आएगी. सो एक चीज ये कि इट शुड ऑलवेज हैव ए स्ट्रक्चर, रैंडमली कुछ भी नहीं लिख देना है. सेकेंड, इट शुड बी एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. जो पूछा गया है बस आप ये देख लो, आपको खुद से पता चल जाएगा कि वो जो पूछा गया है वो बता रहा है कि नहीं बता रहा. इफ इट इज इनडायरेक्टली एड्रेसिंग द डिमांड, डायरेक्टली एड्रेसिंग द डिमांड, जो पूछा गया है उससे आसपास भी है, इट इज गुड. ओके, बिकॉज मेंस के पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन यू आर राइटिंग आंसर इन 7 minutes, ट्रस्ट मी, टू फ्रेम एन आंसर इन दैट 7 minutes इज वेरी डिफिकल्ट. आप बहुत मतलब बस आसपास के कुछ पॉइंट्स लिख पाते हो या कुछ बेसिक डेटा या थोड़ा बहुत चीजें जो याद आती है आप वही लिख पाते हो. ओके, एंड दैट्स व्हाई वन थिंग दैट यू शुड बी sticking to is this addressing the demand and simply intro, body और conclusion. आपको छोटी मोटी टिप्स दे देता हूं कि intro, body, conclusion में क्या होना चाहिए. In case of intro, just remember 3 things. Start with either definition, start with origin और start with data. Define, origin और data, इन्हीं में से तीनों चीज होनी चाहिए. So अगर कोई टर्म मिल रहा है उसको डिफाइन करके बिगिन कर दो, या फिर कोई इश्यू है talk about the origin, or any particular phenomena begin with a data and then reach to that particular issue that has been asked. इन तीनों के अलावा कोई और तरीका नहीं है. So just whenever you see a question, just see what of the method, what possible method that I can apply here, whether I can define a term, whether I can talk about the origin, or whether I can talk about the data. Okay, random intro कुछ सोचना ही नहीं, इन 3 dimensions पे सोचो. Okay, body में you should make sure कि your body should cover almost every possible dimension related to that issue. Okay, और आपकी बॉडी में वो हेडिंग्स में दिखना चाहिए. It should not be like कि आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख रहे हो and expecting the examiner to read each and everything by yourself. वो गलत है. Because आप समझो कि एक तो ये सरकारी एग्जाम है. Okay, सेकेंड, सरकारी इवेल्युएटर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे. And it's not a test series that you will get the copy and you can actually go and ask the evaluator कि भाई यहाँ नंबर क्यों काटे. So you just get the final score. And whatever, based on my limited knowledge, what I know is 15 से 20 मिनट में एक कॉपी इवेल्युएट हो जाती है, क्योंकि उनको कमेंट्स तो देने नहीं है. इट्स लाइक जस्ट वो कॉपी देखेंगे and they will give say the final score and that's what you can expect of them. Now, as per my analysis or what I believe is कि your marks are inversely proportional to the efforts of the examiner. अगर एग्जामिनर ज्यादा एफर्ट लगा रहा है आपको कॉपी को इवैल्यूएट करने में, तो आपके मार्क्स उतने ही कम आएंगे. और अगर आपने एग्जामिनर के एफर्ट को कम कर दिया तो आपके मार्क्स रिलेटिवली ज्यादा आएंगे. ओके, सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आप एग्जामिनर के लिए उस आंसर को विजिबल बना दो. विजिबल कैसे कर सकते हो? by highlighting all the possible dimensions that you have mentioned in the answers in the beginning itself, ताकि वो पेपर देखे, वो आंसर देखते ही he can see that okay, these are the major dimensions that this boy or girl has highlighted, and that is more or less covering the entire paper. Okay, or covering the entire issue that has been asked in the exam or in the question. Okay, so body should have headings, and ये headings से आंसर बनाने में आपको भी फायदा है. If you write your answers in your paragraph, तो कल को जब आप रिवाइज करोगे तो it becomes difficult to recall, कि बड़े बड़े पैराग्राफ याद करना बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन अगर आपने आंसर्स में हेडिंग्स डाली हुई हैं तो आपका आंसर अल्टीमेटली जब शॉर्ट नोट बनेगा तो इट विल बी लाइक 6 to 7 वर्ड्स. ये इंट्रो है, इसकी डेफिनेशन, देन दीज आर द 7 dimensions दैट आई हैव टू टॉक अबाउट, एंड वो 7 वर्ड्स में उस आंसर को आप कभी भी रेप्लिकेट कर सकते हो. बिकॉज इफ यू रिमेंबर 7 वर्ड्स, 7 की पॉइंट्स दैट हैव टू बी टॉक्ड अबाउट, 15-20 वर्ड्स उस की पॉइंट पे लिखने में क्या बड़ी बात है, वो तो आप कभी भी लिख सकते हो. बट इफ यू हैव रिटन इन पैराग्राफ, तो बीच का एक पैराग्राफ मिसिंग है, आप याद नहीं कर पा रहे हो, या एक स्टेटमेंट मिसिंग है, तो in that case it becomes difficult to recall the entire answer. So it is for you also, it is very good to write headings in the body so that it becomes easy for the examiner to evaluate, and second, it becomes relatively easier for you to revise and recall that particular answer. Okay, so ये चीज ध्यान रखनी है. Then the third thing, that is conclusion. So in case of conclusion, I give this dialogue every time in my class, and आप लोगों ने 3 Idiots मूवी देखी होगी. तो उसमें जो आमिर खान को जहां से बाहर निकाला जाता है क्लासरूम से,
and then he comes back and then he talks to the professor and he gives a dialogue, and that dialogue actually means what the conclusion is. वो कहता है आखिर कहना क्या चाहते, and this is conclusion. Okay, so the closer of the answer is आखिर कहना क्या चाहते. So whatever you have explained in the intro, in the body, what do you want to close with? Final statement क्या है आपका? Whether it can be futuristic कि भाई मतलब based on whatever I have written, I want to convey this message, or whether it can be complete analysis or summary of whatever you have explained in the intro and body. So it can be of two types: a summary of whatever you have written अभी तक ऊपर intro और body में, or it can be a futuristic statement कि based on the above data that I have quoted, above information that I have given, we feel that this should be done to avoid this problem. Okay, और ये अगर नहीं करेंगे तो इंडिया इस तरफ जा सकता है. तो जब भी आप फ्यूचरिस्टिक लिखो, खास करके जीएस में, it should always be optimistic in nature. Optimistic means कि थोड़ा पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ दिखाए. अब दो रीजन है. एक तो ये आपका माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ डू यू थिंक और हाउ डू यू अप्रोच ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वेदर यू आर लाइक पॉजिटिव या फिर आप खुद ही होपलेस आदमी हो. और दूसरी चीज है, एक मिडिल क्लास आदमी आपकी कॉपी चेक कर रहा है. ऐसा नहीं होगा कि बहुत अमीर आदमी है, उसको कॉपी चेक करने का शौक है और यूपीएससी में आके कॉपी चेक कर रहा है. तो ही इज डूइंग इट फॉर हिज सैलरी. हु वुड ही वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? डेफिनेटली जिसके आंसर से थोड़ा पॉजिटिव वाइब आ रही है. अब वो ये बताने लग जाए, आप अपने आंसर्स में ये बताने लग जाओ कि इंडिया का तो फ्यूचर एकदम बेड़ा गर्क हो रखा है, सब बेकार है, सब घटिया है, कुछ नहीं हो सकता. तो इन दैट केस व्हाई वुड ही फील गुड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द कॉपी? मतलब वो एक मिडिल क्लास आदमी, वो टैक्स दे रहा है, वो चाहेगा कि कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया के बारे में सच में फ्यूचरिस्टिकली अच्छा सोच रहा है. ओके, ही हैज होप विद द फ्यूचर ऑफ इंडिया. एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर कंक्लूडिंग योर आंसर, it should always have an optimistic conclusion. It should always give a positive vibe about it. Okay, about your personality, about the way you are approaching a particular issue. Okay, so ये आपके conclusion में होना चाहिए. So just remember these basic points. कि intro by 3 methods: define origin data. Body should have headings or the dimensions. एक चीज और body में I just want to highlight. In case of body, what you need to do is कि आप एक पर्टिकुलर इश्यू को लेके यू शुड हाईलाइट ऑल द पॉसिबल डिमेंशन. नाउ इट माइट हैपन दैट द क्वेश्चन माइट बी ऑफ 10 मार्क, द क्वेश्चन माइट बी ऑफ 15 मार्क. द डिमेंशंस एड्रेस शुड बी एग्जैक्टली द सेम इन द 10 मार्कर एंड द 15 मार्कर. बस it's more like a skeleton of that particular issue, that particular topic. अब इस skeleton को खोलना कितना है, कितना elaborate करना है, that depends upon the marks of the question. But whether the question is of even 1 mark question भी आ जाए या 2 नंबर का भी सवाल आ जाए, वो सारे के सारे dimensions होने चाहिए, even if you're writing just 1 word about it. But and if the question is of 10 mark, open it accordingly. If the question is of 15 mark, open it accordingly. So dimensions should exactly be the same no matter 10 नंबर का सवाल है या 15 नंबर. Okay, but उनकी elaboration depends upon कितने marks का है. So prepare a skeleton of the topic by addressing whatever possible dimension should be there. Okay, so intro, body, and finally conclusion, that is the summary, or maybe a futuristic message that should necessarily be optimistic in nature. Okay, आप अगर अपने आंसर्स में ये एड्रेस कर रहे हो तो then I believe कि आपको इवैल्यूएशन और इन सब चीजों की इतनी जरूरत नहीं है. Plus what you can do is you are a big community by yourself. You can make your peer group. 2-3 serious aspirants can make a peer group, and you can make sure that you get a self review of the answer. आप एक दूसरे का आंसर खुद देख लो. You will learn from somebody else's qualities. आप एक दूसरे की क्वालिटीज से खुद सीख जाओगे कि शायद इसने ये चीज बहुत अच्छी लिखी, मेरे में ये कमी थी. और it's not to criticize other, but to learn from somebody else's answer. That might actually help you. Moreover, what you can do is just to enforce accountability. आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि भाई जिसने 2 दिन तक आंसर नहीं दिया वो सबको पिज्जा खिलाएगा. ओके, तो सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी कैन बी एनफोर्स. और मे बी एक हफ्ते तक कोई आंसर नहीं लिखेगा. इफ ही डज नॉट हैव सम जेन्युइन रीजन, ही विल बी फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्रुप. So just make strict discipline with respect to that,
and that will ensure accountability of each and everyone. तो अब आपको वेट इसकी भी करने की जरूरत नहीं कि कोई आपकी कॉपी चेक करेगा तो ही मैं आंसर लिखूंगा. ओके, सो just make sure कि 3 महीने you have to write 4 answers for GS every day, 3 answers for your optional every day. That makes 7 answers a day. Not a big deal. Now what should be the timing? So suppose if you are reading 2 subjects a day, so in that case in the very early morning, say whenever you get up, say आप पहले phase में आप GS पढ़ रहे हो, so just see those 6 questions, what you are, 4 questions that you have to write. Okay, read the content, prepare the content, and then at the end of the day you can attempt those questions rather than कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखेंगे एकदम रैंडमली इम्प्रॉम्प्टू लिखेंगे. ऐसा नहीं करना है, बिकॉज हो सकता है कि 1-2 बार आपने इम्प्रॉम्प्टू लिखा and you might not be able to fetch the content, you might not be able to recall the content, and आपका ब्रेन फिर आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का रीजन देगा कि एक बार पढ़ लेते हैं, याद होगा फिर लिखेंगे. सो कोई रीजन अपने ब्रेन को देना ही नहीं है. और फिर भी उसके बाद इफ यू फील लाइक कि द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू and you're not able to recall, then procrastinate करने से अच्छा है open book लिखो. Just open the notebook, see the content, close it, write it. Because you don't have to procrastinate. The focus is on answer writing. The focus is not on remembering. Remembering, recalling, it will happen with multiple revision. But answer writing तो अभी सीखनी है. Answer writing is like cooking a dish. आपके पास raw material है. How to blend it in such a manner that a final dish can be created. So उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको याद होना जरूरी हो. आप एक बार रॉ मटेरियल को स्ट्रक्चर करना सीख जाओ, आप मेन से पहले 3-4 रिवीजन और करोगे, यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स, एंड मे बी शायद लिखते लिखते यू माइट बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स. ओके, सो दैट्स व्हाई 4 क्वेश्चंस you should be seeing in the beginning of the day, and then one after the other. Say once you read the content, at the end when you close that subject, try to write the answers. Okay, and make it a ritual. No matter what happens, you just are not going to skip it. And say, trust me, agar aap January end tak, if you are able to finish 5 years PYQ of your GS mains and 5 years PYQ of your optional, you will be one of the most strongest contender for this year or 25 mains for sure. Okay, so यही आपको करना है. Now coming for hand holding, कि अगर इसके बाद आपको किसी टाइप की हैंड होल्डिंग चाहिए तो देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स हर जगह पे. डेवलप में भी है. यू कैन से एक्सप्लोर इट. आपको कुछ भी सही लगे अपने हिसाब से, वॉट एवर यू फील लाइक यू आर लैकिंग, you can actually go for it. Okay, so this is what I wanted to share with you just in that short period of time. आप लोगों के कुछ issues हैं, if you have some particular questions to ask, you're most welcome to ask it. Please feel free. आपको कुछ पूछना है? Online students, they are like, sir, I am a college student. Please tell how to do time management. Next year will be my first attempt. How to cover current affairs. So in case of current affairs, what I believe is कि अब newspaper read करना is redundant. There is no point of reading newspaper because you're getting every day summary of newspapers. Okay, पहले क्या था कि newspaper आपके लिए only source of current affairs था. Okay, उस समय internet इतना develop नहीं था, and that's why it was not available to मतलब newspaper was the only source of current affairs. Plus coaching ecosystem was not that developed, and that's why you were not getting monthly magazine. तो अभी न्यूज़पेपर अगर आप रीड कर रहे हो डेली तो आपको नोट्स तो नहीं बनाने हैं. पहली चीज कि बिकॉज ए पर्टिकुलर इशू इज नॉट कवर्ड इन अ सिंगल डे, इट गोज ऑन फॉर लाइक मंथ्स. ओके, अब आप देखोगे कि कई सारे ऐसे इश्यूज हैं लाइक वन नेशन वन इलेक्शन, इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स. मतलब सिंस द टाइम दिस बीजेपी गवर्नमेंट हैज कम, फ्रॉम दैट ईयर टू दिस ईयर 10 साल हो गए, अभी तक वो इशू चल रहा है. नाउ एवरी 1 year or 2, so basically this issue rises up again. So the content is already available there. And आपको एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे आर्टिकल आफ्टर आर्टिकल, एडिटोरियल आफ्टर एडिटोरियल, यू डोंट हैव टू रीड इट. सो इवन इफ यू वांट टू रीड न्यूज़पेपर, द बेस्ट वे इज कि हर दिन कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से यूट्यूब पे एक समरी ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, और कई सारे फ्रीलांसर यूट्यूबर्स आल्सो दे आर डूइंग इट. ओके, फॉर एग्जांपल डीएनएस है, और से अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग न्यूज़पेपर कवरेज मैकेनिज्म है. आप उसको उसके साथ न्यूज़पेपर को रीड करो. सो जस्ट पिक अप योर न्यूज़पेपर, just open that channel, it will, or that particular video, it will tell you that these are the major articles that has been covered, and it will give you a summary of that. After listening to the summary of it, just read the newspaper, that particular area. एक तो आपका न्यूज़पेपर फिल्टर आउट हो गया. अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो अब आपको आधा घंटा लगेगा. ओके, प्लस यू डोंट हैव टू मेक नोट्स.
अल्टीमेटली वो तो आपके मंथली मैगजीन में आ ही जाएगा. सो फोकस शुड बी ऑन मंथली मैगजीन, खास करके जिन लोगों के पास टाइम कंस्ट्रेंट है किसी भी तरीके का, और टाइम कंस्ट्रेंट हम सबके पास है. ओके, सो मंथली मैगजीन इज द बेस्ट. नाउ व्हाट यू शुड डू इज मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग 10 पेजेस अ डे. ऐसा नहीं है कि एक साथ बैठे हैं और पूरी मंथली मैगजीन कवर करेंगे. से एनी मंथली मैगजीन विल बी ऑफ 100 पेज अप्रोक्सीमेटली. 10 pages a day, it will hardly take 1 hour, and say first reading will take 10 days, and then second reading it will take hardly 5 days, and that is how 2 readings of monthly magazine can be done in 15 days. So every day 10 pages a day of monthly magazine should be done. Okay, and that's how आप एक महीने के, मतलब बस आपके साथ एक प्रॉब्लम होगी कि आप एक महीना लैग करोगे करंट अफेयर्स, बट हार्डली मैटर्स. ऐसा थोड़ी ना है कि अगले साल प्रीलिम्स होगा तो वो अप्रैल में से सब कुछ पूछ लेगा, जितने करंट अफेयर्स है सब अप्रैल के ही होंगे. इट हार्डली, सो द पेपर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ. Okay, they are not waiting for April and May to prepare the paper. 1 or 2 questions might come from very recent affairs, but most of them they are basically 2 months और 1-1.5 महीने के पहले जो हुए हैं उसके ऊपर सवाल आते हैं. Okay, moreover in mains there is very less chance of asking a very direct question on some particular incident that has happened, unless and until it's too big, too grand. ठीक है, मंगलयान वगैरह इस टाइप का कुछ बड़ा इंसिडेंट हो गया, इंडिया ने कोई बहुत बड़ी फीट अचीव कर ली, इट इज देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन ए पर्टिकुलर issue that has happened recently would have happened, would be asked. Else there are thematic questions. Okay, and उसमें कुछ एक significant event हुआ होगा, but mainly it's theme based questions that are asked in the mains, and that's how तो current affairs के केस में monthly magazines 10 pages a day, that is what you should be following regularly. आप उसको 10 पेज रीड करोगे and finish it in 1 round 10 दिन में, and then 5 days में second round. Yes. हमारे स्टेट में अप्रोचेस, मतलब हमारी मेंस भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न की होती है. सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू डेवलप दिस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, आई एम नॉट बीइंग एबल टू अडैप्ट टू दिस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न. मतलब मुझे पता नहीं कि हाउ डू आई अप्रोच दिस एग्जाम, क्योंकि स्टेट पीसीएस करी हुई है. तो क्या व्हाट शुड आई डू इन ऑर्डर टू अडैप्ट माय सेल्फ टू दिस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न? So first thing again that comes to कि पहला आपका सिलेबस खत्म है कि नहीं, whether you have done your syllabus, yes or no. Preparing for UPSCs. So in that case आपको that I told you the first instruction only कि this session was not for you specifically. आपका तो अभी उस बारे में उस स्ट्रैटेजी वाले मोड में जाना ही नहीं चाहिए. आपको तो पहले तो रीडिंग करो जो भी सिलेबस है उसका, and then make notes of it. Okay, step by step. Don't go for any kind of specific strategy. The 16 subjects that I highlighted here, just start one after the other. Modern India शुरू किया, उसके notes बनाए, and then check PYQs प्री के एंड मेंस के दोनों के, एंड जस्ट मेक श्योर कि आपके नोट से वो प्री के 10 साल के PYQ एंड मेंस के 5 साल के PYQ हो रहे हैं, एंड दैट इज हाउ यू विल बी मेकिंग योर नोट्स कॉम्प्रिहेंसिवली. ओके, तो अभी आप वन आफ्टर द अदर just make your notes syllabus wise and then check PYQs हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, and that is how you will be making comprehensive notes, and then you can go for answer writing. Yes, please. Very good. See, if you do that, actually what actually happens is कि आप अपनी क्रिएटिविटी किल कर रहे हो. ओके, आपने बेसिकली एक बार भी किसी एक कंटेंट को ब्रेनस्टॉर्म किया नहीं, आपने एज इट इज उसको लर्न कर लिया. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट क्रिएटिंग एन आंसर, यू आर रिकॉलिंग व्हाटएवर यू हैव रिमेंबर्ड. अब प्रॉब्लम ये है कि द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी एग्जाम इज टू बिग, टू वास्ट. आप इतना कुछ याद नहीं कर पाओगे. और इमेजिन सपोज आपने एक टॉपिक पे 500 वर्ड पढ़े हैं, तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू राइट ओनली 200 वर्ड्स. बट अगर आपने एक टॉपिक पे पढ़े ही 250 वर्ड है, मॉडल आंसर तो वर्ड लिमिट को फॉलो करेगा, तो आप मुश्किल से 100 वर्ड लिख पाओगे. आप वर्ड टू वर्ड तो रिकॉल या रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाएगा. बट इफ यू हैव चर्नड आउट सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप मॉडल आंसर से कंपेयर कर सकते हो. एंड हाउ डू यू नो द वैलिडिटी ऑफ दैट मॉडल आंसर, किसने निकाला है वो मॉडल आंसर? Whether UPSC has released their model answer that this is the model answer that is you should follow. Model answer should be considered model only if UPSC comes out of it.
से कि भाई यूपीएससी ने बोला कि ये मेरा मॉडल आंसर है, इसको आप फॉलो करो, तो हाँ भाई वो जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसने कुछ बोला है तो मानते हैं, एल्स बाकी सबके मॉडल आंसर आपके जैसे ही हैं। ओके, बस ये है कि आपको फोबिया इतना ज्यादा है, सेल्फ डाउट इतना ज्यादा है कि आपको कोई भी आंसर लिख के दे रहा है तो आपको लग रहा है कि ये मॉडल आंसर ये मेरे से बेहतर है। इवेंचुअली डोंट गो फॉर दैट सेल्फ डाउट। हाँ, आई हैव टोल्ड यू दैट कि पहली बार पहला आंसर बहुत घटिया होगा, पर कोई बात नहीं, you will reach 50th आंसर and you will eventually realize कि मेरी आंसर राइटिंग कैपेसिटी, कंटेंट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट और से आर्टिकुलेशन, इट हैज इम्प्रूव्ड बेटर। पर वो तो करते करते ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि पहला ही आंसर मॉडल आंसर हो जाएगा। ओके, टॉपर कॉपी को आप मतलब एक चीज में देखो कि किसी क्वेश्चन को नॉर्मली वो पीवाईक्यूज नहीं लिखते, तो टेस्ट सीरीज की कॉपीज होंगी। टॉपर कॉपी को आप मेनली इस तरीके से देखो कि हाउ दे आर बेसिकली डिवाइडिंग ए क्वेश्चन, व्हाट आर द डिमेंशंस दैट दे आर टेकिंग आउट ऑफ इट। ओके, जस्ट लर्न हाउ दे हैव अप्रोच्ड ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि उसमें क्या क्या डिमेंशंस एड्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हैं उसको, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू शुड बी लर्निंग। अच्छा, दूसरी चीज है एक थोड़ी इंटरनल इंफॉर्मेशन, टॉपर कॉपीज को थोड़ा मतलब टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। व्हाई? Because you don't know in what condition these copies have been written, whether they were written in a 3R environment or whether they were written in like answer writing practice के form में, you actually do not know। because जैसे आप खुद भी सोचो कि कल को आप टॉपर बन गए तो आप अपनी कौन सी कॉपी अपलोड करोगे, राइट? सो अगर आपके पास जो सबसे बेस्ट होगी, और सबसे बेस्ट डेफिनेटली वो 3 घंटे वाली तो नहीं होगी। एवरी टॉपर बेसिकली जो बड़े बड़े टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं जिसमें 35-40 टेस्ट होते हैं, तो व्हाई डोंट दे अपलोड ऑल द कॉपीज? 40 कॉपी, 30 कॉपी, किसी भी टॉपर की 30 कॉपी या 10 कॉपी भी आपको नहीं मिलेगी। व्हाई? बिकॉज ओनली 1 or 2 कॉपीज विच माइट नॉट हैव बीन रिटन इन द एग्जाम वाले कंडीशन में, दैट आर द बेस्ट कॉपीज। सो उसको बहुत ज्यादा बेंचमार्क नहीं बनाना है, जस्ट लर्न फ्रॉम देम कि how they have broken up the question, whatever the dimensions that they have taken up, but don't create it as a benchmark कि इस भाई ने ऐसे आंसर लिखे, मैं तो ऐसे लिख ही नहीं सकता, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा? बिकॉज आपको नहीं पता कि वो किस कंडीशन में लिखे गए हैं, 3 घंटे में या 5 घंटे में या इस टाइप की कॉपी से। तो और या फिर हो सकता है आपके कोई भैया दीदी हैं जो टॉपर हैं, जिन्होंने आपको ऑनेस्टली बोला कि ये देख कि मैंने 3 घंटे में लिखी कॉपी है, मैं एकदम मम्मी कसम टाइप, तब आप ले लेना और तो फिर मत लेना। ओके, टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको एक अपने क्लास नोट्स रखने हैं जो भी आपके बेसिक नोट्स हैं, एंड देन ऐड इट फ्रॉम एनी कोचिंग मटेरियल, कोई भी एक कोचिंग मटेरियल, क्योंकि किसी भी जैसे वाजीराम, नेक्स्ट या विजन, इन सब का इनकी कंटेंट टीम बहुत बड़ी है, हम तो छोटे से हैं यार, तो इनकी कंटेंट टीम बहुत बड़ी है, एंड व्हाटएवर इज अवेलेबल इन द मार्केट दे कंपाइल एवरीथिंग इन अंडर देयर मटेरियल, तो आप उसके एक मटेरियल को लेके अपना वैलिडेशन कर सकते हो, दैट विल हेल्प। एनसीईआरटी भी उस मटेरियल में एडेड है। हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर ट्रैप दैट वी ऑल आर फेसिंग, एंड दैट इज सेंस ऑफ कंप्लीशन एंड सेंस ऑफ परफेक्शन। ठीक है, ये दोनों ट्रैप में अगर आप फंस जाओगे कि परफेक्ट होना चाहिए, तो वो कभी ना परफेक्ट होगा ना सिलेबस कंप्लीट होगा, सेंस ऑफ कंप्लीशन विल नेवर हैपन। सो जस्ट मेक श्योर, आपको बस इतना चेक करना है आपके नोट से कि पीवाईक्यू बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर पीवाईक्यू बन रहे हैं तो आपका नोट्स कंप्लीट है, नहीं तो फिर आप रिवाइज कैसे करोगे? If that is how you are comfortable, तो it actually works। मतलब there is no single strategy। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का सजेशन है, बट वो ओल्ड स्कूल यही है कि आप जितना घिसोगे, ओके, या फिर आप अपने जितने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, दैट विल एक्चुअली वर्क फॉर यू, बिकॉज इट्स इजी टू रिवाइज, इट्स इजी टू रिमेंबर। ओके, किसी और के प्रिंटेड नोट्स किसी और ने दिमाग लगा के स्ट्रक्चर किया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन इन योर माइंड। थोड़ा ओल्ड स्कूल है, बट एक्चुअली आई बिलीव कि यूपीएससी एग्जाम इज नॉट अबाउट doing something extraordinary, but doing something ordinary for a long period of time। Okay,
वो थोड़ा एक कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो वो वैसा ही है कि यू हैव टू डाई, यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट विच एवरीबडी एल्स इज पुटिंग अप. तो शॉर्टकट्स बेसिकली विल नॉट वर्क हियर. But if you are comfortable in remembering it, if you are comfortable in recalling it, you can go for it. हाँ 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 ओके. सो पहला तो इनिशियली इट माइट हैपन दैट कि कंटेंट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो. तो जब आप डेली लेवल पे आंसर लिख रहे हो तो वहां पे तो आप नोटबुक खोल के जस्ट रीड सम मोर कंटेंट एंड ऐड इट टू योर आंसर राइट नाउ. अभी आप इस तरीके से अपने करने की कोशिश करो. इससे बेसिकली आपका कंटेंट थोड़ा इंप्रोवाइज कर जाएगा. एग्जाम में इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, जस्ट एक स्ट्रक्चर बना सकते हो कि दैट हाईलाइट एक पर्टिकुलर थीम पे मेजर डायमेंशंस कौन कौन से हैं, एंड ऑन द डायमेंशंस ट्राई टू थिंक ऑन दोज लाइंस. से बेसिकली इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, एनवायरमेंटल डायमेंशन क्या है, सोशल डायमेंशन क्या है, लीगल डायमेंशन क्या है, ओके या ज्योग्राफिकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे किस तरीके से इंपैक्ट हो रहा है. तो इफ यू थिंक ऑन दीज डायमेंशन यू विल बी एबल टू जनरेट सम पॉइंट्स. Regarding essay also, this PYQ strategy works. Okay. Now, if you just look at last 3 years paper or 4 years at max, so you'll find that there are 32 topics or 24 topics if you see 3 years paper that are there in your essay paper. आप उन सब 24 topics पे एक बढ़िया intro और conclusion बना के रख लो. Okay, because the themes get repeated in essay also. So even in the philosophy also, you'll find certain themes. The quotation might be different, but the themes are similar. Like, for example, the purpose of life, courage, wisdom, experience, knowledge. इसके ऊपर quotes आ रहे. Okay, और identity और reality versus illusion. इस तरीके से there are some major themes in the philosophy that have been asked as question. Quotation डाल देंगे कुछ. But the insider theme is something like that कि knowledge, experience, courage इस तरीके से या purpose of life type. So if you have made intro and conclusion for these 24 topics, you have some templates by which you can begin an essay. You have some template by which you can conclude a particular topic. Now whenever अब उसके बाद आपने intro conclusion बना लिया है 24 topics पे, just remember it and then try to attempt any essay. आप देखोगे कि उन 24 intro conclusion में से no matter whatever is the question in the essay exam, आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे जिसमें वो 24 इंट्रो कंक्लूजन में से कोई 2 फिट बैठ जाएगा. एंड 50% ऑफ योर essay is done if you have prepared or if you have already have intro and conclusion, because the major problem in essay comes with how to begin it and how to conclude it. Okay, and if you already have those templates, आपका 50% टास्क खत्म हो गया. बॉडी लिखना essay का बहुत इजी हो जाता है because body ultimately is derived from the knowledge that you have learned from GS. So आप GS के हिसाब से dimension सोचो. Say historical dimension में try to find some context in that particular topic. Then आपके GS के जितने भी subjects हैं, say geographical dimension, social dimension, political dimension, governance or legal dimensions, economic dimensions, security dimensions, environmental dimensions, scientific dimensions, then moral or ethical dimensions. And think on those lines, you will find certain relevant content related to it. तो body बनाना तो बहुत आसान है, but the problem comes when how to begin and how to end. And most of the people जो आपका essay का impression है वो आपके intro और conclusion से ही आ जाता है. अगर आपने essay का intro बहुत ही weak लिखा है, means कोई ऐसे curiosity generate नहीं कर रहा है, तो in that case initial impression खराब है तो वो आपका base mark ही कम रखेगा. Say for example, if one essay has to be evaluated from 50 marks out of 50, so if I find that your intro is relatively very weak, very bogus type का लिखा है, वो मुद्दे की बात ही नहीं कर रहा, तो I might start evaluating from 10. Okay, और फिर आपके body और conclusion देख के I might reach to the stage of 22, 23 नंबर आपको दे दूं. But suppose if I was very impressed in the very first 2 paragraphs of your essay, यार बढ़िया शुरुआत की एकदम मजेदार तरीके से, so in that case I might start evaluating your essay from 15 or 17 and I might reach to a stage of 35, 40. Okay, so it's like how you begin. So remember, essay is more like a movie. Okay, picture की तरह है वो, और पिक्चर में
जो सीटी बचती है वो हीरो की एंट्री पे और या फिर क्लाइमैक्स पे बचती है। एंड द इंट्रोज एंड कंक्लूजन आर दोस टू एस्पेक्ट्स, कि आप इंप्रेस किसी को किस पे कर सकते हो, आप कैसे बिगिन कर रहे हो ऐसे को, और हाउ यू आर कंक्लूडिंग इट। इफ योर बिगिनिंग इज गुड, तो बॉडी अगर आपकी बहुत एवरेज भी जा रही है, तो जब तक वो इंप्रेशन कम होगा तब तक आपका एक अच्छा कंक्लूजन आ जाएगा, इट विल हैव ए गुड क्लाइमैक्स। बट इफ योर इंप्रेशन, इनिशियल इंप्रेशन, अगर कोई मूवी आपको इनिशियली इंप्रेस नहीं कर पा रही, क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं कर पा रही, इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट यू विल बी एबल टू सस्टेन दिस लॉन्ग मूवी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप रीड, मतलब आपको बर्डन लगेगा वो। एंड दैट इज द एसे फोकस अपॉन दिस इंट्रो कंक्लूजन। नॉर्मली क्या होता है कि हम बॉडीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि ऐसे में ये कंटेंट डाल देंगे, वो कंटेंट डाल देंगे। द मेजर फोकस शुड बी हाउ टू बिगिन एंड हाउ टू एंड। एंड उसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लास्ट 3 years के पीवाईक्यू पकड़ लो और सबके इंट्रो कंक्लूजन बना के रख लो। अब आपसे तो नहीं बनेगा बिकॉज हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, और एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल नहीं बनता। सो प्रिपेयर टेम्पलेट्स। इन दैट केस थोड़ा नेट पे देखो, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे स्पीचेस हैं ऑन दोज टॉपिक्स, यू विल फाइंड इट। एंड वो स्पीचेस के इनिशियल एक्सर्प्ट्स, some paragraphs can be taken, TED talks आप देख सकते हो उन particular topics पे, and you will find some very good beginnings of those speeches which can exactly be quoted in your essay, some stories, some good anecdotes, okay। और लास्ट में you have AI tools to create it, so आप उसको इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली दे सकते हो कि दैट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक एनेक्डोट बेस्ड इंट्रो दो विद अ सर्कुलर कंक्लूजन। दैट मींस कि एक इंट्रो शुरू होता है एंड उसका कुछ पार्ट बीच में छोड़ दिया, and finally it will get connected in the conclusion. So you can give that particular instruction and you will get that particular intro conclusion which can actually आपको एक अच्छे इंट्रो कंक्लूजन के टेम्पलेट्स दे सकते हैं। और आपके पास 24-25 टेम्पलेट हैं इंट्रो कंक्लूजन के, ट्रस्ट मी कोई ना कोई तो एसए में फंस जाएगा। आप उसके बाद कोई भी पेपर करके देखो, यू विल फाइंड दैट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एसए लिखते रहते हैं कि, और सोचते हैं कि लिख लिख के सही होता जाएगा, लेकिन उस एक बार एस्से लिखने के बाद आपने एस्से पे क्या चेंज किया कि अगला एस्से बेहतर हो जाए? नथिंग। बस दोबारा फिर लिखने जाएंगे, तीसरी बार फिर लिखने जाएंगे सोच के कि इस बार कुछ अच्छा लिख जाएंगे। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज डेवलप सम गुड टेम्पलेट्स फॉर इंट्रो कंक्लूजन, एंड इफ यू हैव दैट 10 पेजेस के नोट्स जिसमें 24 इंट्रो कंक्लूजन या 30 इंट्रो कंक्लूजन्स हैं ऑन डिफरेंट थीम्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 3-4 years, ट्रस्ट मी आपका एस्से का पेपर विल बी, आई एम नॉट सेइंग आपका स्कोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, but your score will never fall below average. Okay, your score will be somewhere above average only. 100%. 125-30 नंबर कहीं नहीं जा रहा. That is, I can assure you of if you have done 3-4 years of essay, सिर्फ intro conclusion. Okay. So, anything else? See, anthropology वालों के लिए I'll take up, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का anthro नहीं होगा, so that it makes no sense to discuss anthropology right now. हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? Yes, please. हाँ, रोज की मंथली मैगजीन आपको याद किसने करनी है? आप, हम लोग प्रॉब्लम क्या है कि हम पहली रीडिंग के बाद ये अपने आप से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वेदर वी आर एबल टू रिमेंबर इट नॉट, एंड आवर ब्रेन स्टार्ट्स अस टू ट्रिगर अस कि भाई याद होनी चाहिए, मैं भूल रहा हूं, पुराना जो पढ़ लिया वो भूल गया, आगे का कैसे पढ़े? बट देर इज वन वॉइस ऑफ द ब्रेन दैट विल टेल यू कि नहीं याद हो रहा, भूल रहे हैं। देन यू शुड काउंटर इट बाय सेइंग दैट कि भाई ये आखिरी बार थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। अभी what you are reading for the first time, you will be reading it at least 2 to 3 times before you will be writing the exam. आज अगर 50% याद है तो 3 रिवीजन के बाद 70-80% तक का होगा कि नहीं होगा, एंड इवेंचुअली आपका काम भर का हो जाएगा। एनुअल रीडिंग, जो एनुअल जो मैगजीन्स आती हैं, इट इज जस्ट नथिंग बट समरी ऑफ वॉट एवर यू आर रीडिंग इन द प्री, जो मंथली मैगजीन है, सॉरी। ओके, तो आप 2-3 बार उसको रिवाइज कर लोगे तो एनुअल मैगजीन विल बी जस्ट लाइक आपको स्किम ही करना होगा। So don't worry about it. भूलना it's a common tendency, ये human nature है and everybody is facing it. But being consistent despite knowing that कि हम भूल रहे हैं, वो important है। Just read it, revise it, no matter भूल रहे हैं कोई बात नहीं, अपने आप को बार बार ये समझाना है कि भाई ये आखिरी बार नहीं पढ़ रहा हूँ, I still have time, I'll be requiring this content maybe 1 year later. तो again a movie, all is well.
तो अपने आप को समझाना लेना, ऑलवेज वेल ऑलवेज, कोई बात नहीं, आगे काम आएगा, अभी आगे टाइम है, रिवाइज करते रहेंगे, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस प्लीज। ये वही तो थी यार। हाँ जी, हाँ हाँ, यही तो बता रहा था कि आप पॉलिटी कर लिए, ज्योग्राफी शुरू किया, पॉलिटी आपको लग रहा है भूल गए, कोई बात नहीं यार, एक बार ज्योग्राफी खत्म हो जाए उसके बाद ऐसे थोड़ी ना कि पॉलिटी बस कल ही एग्जाम देना है, आपको टाइम मिलेगा और रिवीजन करने का। आपको अगले साल अगस्त में पेपर देना है मेंस का, यू विल गेट इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवाइज दीज कंटेंट मल्टीपल टाइम्स। तो अगर आपको अभी कुछ भूला जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप आगे रिवाइज कर लोगे, बट एटलीस्ट यू हैव कंप्लीटेड ए सिलेबस, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। तो ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ स्ट्रेंथ। हमारे जो ब्रेन है वो हमें बार बार वही चीज बताएगा, व्हाट वी लैक। You should remind yourself कि what do we have, what strengths do we have. So remind yourself कि चलो पॉलिटी खत्म हो गया, आगे रिवाइज करने का टाइम होगा। Imagine if you are reading polity for the first time post prelims, अब तो ज्यादा प्रॉब्लम है ना। At least you are in a better situation now. You have done it, revision में कम टाइम लगे। Anything else? हाँ हाँ, डेली आंसर राइटिंग में डोंट गो फॉर टाइम बाउंड मैनर, बिकॉज इवेंचुअली आपको आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है, टाइम मैनेजमेंट तो आप टेस्ट सीरीज से करोगे। ओके, सो डेली आंसर राइटिंग इट शुड बी लाइक 20-25 मिनट्स एक आंसर लिख रहे हैं, प्रॉपरली लिख रहे हैं, प्रॉपर कंटेंट डाल के लिख रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर करेंगे, नॉट टाइम बाउंड मैनर, 7 मिनट 8 मिनट में आंसर नहीं करना है। एनीथिंग एल्स? आप देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमें बहुत रीसेंट एग्जाम्पल चाहिए या कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसेशनल एग्जाम्पल होना चाहिए तभी नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, बेसिक एग्जाम्पल है, जो सबने लिखा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस लिख ही नहीं पाते। सो इफ बेसिक एग्जांपल्स आप लिख रहे हो देन आल्सो इट इज मोर देन इनफ। ओके, तो डोंट वरी फॉर दैट कि केस स्टडीज, नई नई केस स्टडीज है, नए नए एग्जांपल्स उठा रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। ओके, कहीं से मिल जाए, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो या आप करंट अफेयर्स रीड कर रहे हो, यू फाइंड दैट कि दिस इज रेलिवेंट फॉर मी, इमीडिएटली राइट इट डाउन, बट डोंट गो फॉर ए सर्च कि कोई नया एग्जांपल लेके आना है। यस प्लीज। रिवाइज करना और कुछ नहीं करना है, देयर इज नो मैजिक वैंड। मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि आई गिव यू सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशन, कोई ऐसा कि गवर्नमेंट स्कीम और उसको करके ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा। रिवाइज करना है और कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो कुछ याद रहेंगी, कुछ भूल जाओगे, आपको वैसे भी 100% स्कोर नहीं करना है। ओके, सो इवेंचुअली काम भर की याद हो जाती है, अब 2-3 रिवीजन करोगे तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, एंड यूपीएससी आई एम श्योर दे आर नॉट आस्किंग लाइक एनी रैंडम रिमोट स्कीम जो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होल्ड करता है उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब बहुत बेसिक अगर जो स्कीम है जो बहुत रेलिवेंट है एंड इट इज हेल्ड बाय सम वेरी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री जो भी है, तो उसके बारे में बात करें। कुछ रेवोल्यूशनरी स्कीम है तभी पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी मोटी स्कीम के बारे में पूछते रहे। उतना ही कर लो, बहुत है। सो डोंट गो फॉर लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोर्सेज कि भाई 50 दो जो हैं वो नहीं हो रहे हैं तो 10 और सोर्स ऐड करके कैसे होगा। अभी आप बोल रहे हो कि जो मैगजीन वाली आपको पूरी याद नहीं हो रही, आप बोले कि उसके अलावा पीआईबी और इधर उधर के उठाएंगे, तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। ओके, आंसर यहाँ पे कितने लोगों का आंसर है? उसके लिए आई विल डू वन अनदर सेशन। ओके, आई टेक सम अदर सेशन। सोशो का पेपर 2? अरे यार, नहीं नहीं, पेपर 2 में हमारे मैरिज किनशिप हमारे पेपर 1 में है। अरे यार, so somebody is asking what is the difference between target mains and mains master program? target mains current affairs program है, mains master program भाई वो crash course है mains के लिए। so I think I have taken all your queries। anthro के लिए I'll organize some other session, मैंने mentally prepare भी नहीं किया है। हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत जल्दी करें। ठीक है, ओके, जी बोलिए बोलिए।
देखो, जो भी टॉपिक आपको जीएस में पढ़ाया जा रहा है या ऑप्शनल में पढ़ाया जा रहा है, आप उस क्लास नोट्स के साथ जाके पीवाईक्यू देखा करो। अगर आपके पीवाईक्यू उस क्लास नोट से हो रहे हैं तो दैट मींस योर क्लास नोट इज सफिशिएंट। उस पर्टिकुलर टॉपिक के बस पीवाईक्यू चेक करते रहो। ओके, और ऐसे ही ऑप्शनल में भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो पीवाईक्यूज आप चेक करो, आप अगर हो रहे हैं दैट इज सफिशिएंट। अगर नहीं हो रहे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बस ऐड करके उसको रखते जाओ, सो दैट एटलीस्ट जो भी टॉपिक्स क्लास में कवर हो रहे हैं यू आर श्योर दैट कि अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं दैट हैज बीन एड्रेस्ड इन द नोट्स, आपके नोट्स बन गए हैं वैसे। So that is more than enough अभी फिलहाल के लिए, as long as your classes are going on, you cannot afford more than this, but make sure कि जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो। ओके, मतलब उसके प्री के पीवाईक्यूज और मेंस के पीवाईक्यू आपके नोट से हो जाने चाहिए, दैट्स इट। नहीं, यही तो मैंने सबसे शुरुआत में आपको बोला कि अगर आप अभी क्लास वाले मोड में हो, अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो पहले तो आप वही खत्म करो। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन लेने की, सबके दिन में 24 ही घंटे हैं, अगर आपके 3 क्लासेस जा रही हैं तो यू हार्डली हैव 2 to 3 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। इन दैट केस यू जस्ट कैन नॉट ओवर बर्डन योरसेल्फ। बस चेक करते रहो आपके कंटेंट से पीवाईक्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सॉल्व करना जरूरी नहीं है। तो डोंट गो फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ओवर एम्बिशियस टारगेट की दिन में 14 घंटे पढ़ेंगे या 15 घंटे पढ़ेंगे, वो हो नहीं पाएगा। ओके, ये पूछना पड़ेगा यार, मेरे को नहीं पता। हाँ बताइए। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बेसिकली मेक सेंस ओनली आफ्टर 4 और 5 रीडिंग्स। ओके, अभी आप पहली रीडिंग के बाद व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि सब इंपॉर्टेंट लगता है, तो शॉर्ट नोट में आपको सिर्फ फॉन्ट छोटा होता है। ओके, सो 10 पेज का जो शॉर्ट नोट है, जो नोट है, वो शायद 8 पेज का बन जाएगा, जस्ट बिकॉज आपने छोटा लिखा है। ओके, उसमें कुछ शॉर्ट हुआ नहीं है। हाँ तो ठीक है, हाईलाइट कर दिए तो वो तो आप पहली, लेकिन आपकी अगर हाईलाइट करने की आदत है ना तो इतना ज्यादा ओवर हाईलाइट हो जाता है, कॉपी फटने लग जाती है फिर वो। सो आई बिलीव कि आंसर राइटिंग इज द बेटर वे, कि वो ऑटोमेटिकली किसी कंटेंट को ना 200-250 वर्ड 300 वर्ड में कंप्रेस कर देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू।